वीडियो पे आ रहे लोग वीडियो पे आ रहे हैं, वीडियो से हटा रहे हैं फोटो आ गया। चल स्टार्ट। Okay, good morning student. As today we are starting the question based on the quadratic equation. Okay, last exercise में हम लोगों ने quadratic equation के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए और होप कि आप लोग भी घर पे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है यू कैन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन व्हाट्सएप या इन व्हाट्सएप ग्रुप या क्लास गूगल क्लासरूम। ओके, वहाँ पे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर joining this class first time, okay, so then please watch the previous video of the quadratic equation and please watch the previous chapters. Okay, means first is banking, second GST, third linear equation, and now this is quadratic equation. Okay, you can go through our playlist में आप लोग जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर के लेक्चर, जितने भी लेक्चर हैं वो लोग मिल जाएंगे और जितने न्यूमेरिकल्स होंगे, जो टफ न्यूमेरिकल है, जो चेंज न्यूमेरिकल, वो भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, नाउ टुडे वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 20 x plus 1 upon 2x plus 5 is equal to x plus 3 and upon 3x plus 4. Okay, and the question is using the formula find the root of this equation. Okay, if you are able to solve this equation by a splitting method जिसमें साइड करते हैं, फैक्टर ब्रेक करते हैं, उससे भी कर सकते हैं, या second using the formula, but in our question is already written using the formula solve this question. And you know that the formula for the quadratic equation is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. So we can apply this formula when we have a quadratic equation. So first of all, our duty to find the quadratic equation with the help of this equation. So first make this given equation in the form of a quadratic equation. So cross multiply, so x plus 1 then 3x plus 4 is equal to x plus 3 cross multiplication and 2x plus 5. Okay, now multiply this x plus 1 with the bracket, so 3x square plus 4x plus 3x and plus 4 is equal to 2x square plus 5x and plus 3 to the 6x plus 5 to the 15. Okay, arrange all the term in left hand side. So then first 3x square on solving the left side, so 7x plus 4, then minus 2x square and 7 and 6 are 5 11, so minus 11x and minus 15 is equal to 0. Okay, now 3x square and minus 2x square, 3x square minus 2x square, x square, next 7x and minus 11x, so minus 4x 7x minus 11x minus 4x and then plus 4 and minus 15, plus 4 and minus 15, so minus 11 is equal to 0. So this is the standard form of a quadratic equation. We have obtained our quadratic equation. Now अगर आपको फैक्टराइजेशन से आता है तो आप करिए, बट अगर जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द फार्मूला, तो हियर इज द फार्मूला, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a b c इन द गिवन फार्मूला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax square plus bx and plus c is equal to 0. When we compare this equation, so then a is equal to 1, b is equal to minus 4 and c is equal to minus 11. Now formula is x is equal to minus b, and what is the value of minus b? b is minus 4, so minus 4, then plus minus root b square minus 4ac, so minus 4 का square b square minus 4ac, so 4 into a is 1 and c is minus 11. Okay, and whole upon 2a, so 2 into a is 1, 2 into 1, so x is equal to minus minus plus 4 plus 4 plus minus root minus 4 minus plus and 4 for the 16 and minus minus plus. Okay, and 11 for the 44
and whole upon 2. So then x is equal to 4 plus minus then 14 and it is 16. Okay, 60 and whole upon 2. Okay, so can you solve this part? X is equal to 4 plus minus under root 60. So first of all find the root of 60. रूट फाइंड करो, रूट के बाद क्या करो, एक टाइम पॉजिटिव लेना है, एक टाइम नेगेटिव लेना है और उसको क्या कर देना, डिवाइड कर लेना 2 से. तो व्हाट इज द रूट ऑफ द 60? So write in the comment section immediately. Yeah, solve in your rough notebook and then write the comment in the comment section. Okay, what is the value of root 60? Please write in the comment section. देख कर ले पार्ट 1 उजाल हुए सारा साफ ही नहीं दिख रहा हूँ. कितना होता है? ओके, हाँ, समर्थ कुकरेती 7.745. ओके, वेरी गुड समर्थ कुकरेती 7.745. So then remaining part you can try to solve it. Okay, so 4 one time take the plus sign, 4 plus 7.745 divided by 2, so then it will become 11.45 something divided by 2. So then you can calculate the first answer of this question. Second time 4 minus 11 7 point something, so it may be 3 point something and divided by 2, so that is the another value of the x. Okay, so hope you understand this one, and all are the same question are given in this exercise. Okay, so then now look at the question number 21. Question number 21. And the question is 21C part, third part. Okay, third one. So then 10x square plus 3bx plus a square minus 7ax and minus b square is equal to 0. And using the formula find the value of x. So देखो, first of all arrange this equation in the form of the quadratic. So you know that highest power of the quadratic equation is x square. Okay, plus now this is the term of x and this is also in the terms of x. So we can solve these two parts. Okay, so 3b minus 7b. So 3b minus 7b, so this and minus 7ax. Okay, so then x is common out. X is common out. So we can write here 3b minus 7a and x is common out. Then the remaining part is plus a square and minus b square. Plus a square minus b square is equal to 0. Okay, so 3b x is common, next a square and remaining is minus b square equal to 0. So it is means compare this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. So on comparing, so then we will obtain a is equal to 10, b is equal to this whole part is the value of the b. Okay, b is equal to 3b minus 7a and c is equal to a square minus b square. Okay, so substitute the value in the formula. The formula is minus b, and what is the value of the b? b is 3b minus 7a minus b plus minus root b square, and b square means this part. So 3b minus 7a whole square, b square minus 4 into a is 10 into c, 4 into c, and c is a square minus b square. Okay, and whole upon 2a, and 2 into a is your 10. Okay, 4 into b square minus 4ac, 4 is 4 and a is 10 and c is a square minus b square. So now on solving, the whole part is in the bracket and everything, so then it is open the negative sign. Yeah, after that we can solve this part. 3b minus 7a plus minus then root expand this a minus b whole square. So 3 3 is 9 b square, a square plus b, so 7 7 is 49 a square, 49 a square plus b square minus 2ab. So 2ab means 2 into 3b into 7a. Okay, so then it is 7 3 is 21 and 21 2 is 42. Yeah, 3 2 is 6 6 7 is 42. So 42
AB. ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस 4 into 10 with the whole bracket. इसकी मल्टीप्लाई के अंदर करो तो कितना हो गया, माइनस 4 10 जब 40 तो 40 a स्क्वायर माइनस 40 a स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 40 b स्क्वायर and whole upon is 2 into 10. 2 into 10 is 20. Okay, तो on solving this part हम लोगों को ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं हम. Now x is equal to minus 3b minus 7a plus minus. Now solve the root. इस रूट को सॉल्व करो. देखो सेम पार्ट को देखना क्या है, 49a स्क्वायर एंड माइनस 40a स्क्वायर. तो देन पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, तो साइन इज पॉजिटिव. तो 9 49 माइनस 40 तो मींस 9a स्क्वायर. देन सेकंड 9b स्क्वायर एंड सेकंड इज 40b स्क्वायर. 9b स्क्वायर प्लस 40 तो 9 और 40 49 तो प्लस 49b स्क्वायर and the remaining one is minus 42 into AB. Minus 42 AB. तो minus 42 AB. Okay, minus 42 AB and whole upon 2 into 10 तो 2 into 10 is 20. Okay, तो then x is equal to minus 3b minus 7a प्लस माइनस. अच्छा, इस वाले पार्ट को सॉल्व करो जरा. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a स्क्वायर मींस 3a होल स्क्वायर. नेक्स्ट प्लस 7b होल स्क्वायर एंड दिस 29 कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ 21 into 2 और 21 we can write 3 into 7 into then part 2. ओके, तो देन ये वाला यहाँ पे किसका फॉर्मूला बनेगा, देन माइनस 2 into a is 2ab होता है ना, 2ab तो 2a 3a and b 7b. तो देखो जरा सॉल्व करो. 3 2 जा 6 6 7 जा 42ab. यही बन रहा है. इट मींस दिस इज द फार्मूला ऑफ 3a and साइन इज नेगेटिव माइनस वो 7b होल स्क्वायर. ये फार्मूला आप लोगों को मिलेगा. तो देन रूट 3a minus 7b and whole square and whole upon 2a. तो 2a 20, this is 20. Now minus 3b minus 7a plus, now remove this under root and square, cancel out. We can say that तो 3a minus 7b and whole upon 20. Okay, so this is the first part. Now on taking the positive sign, इसमें क्या ले लो आप लोग, पॉजिटिव साइन ले लो. पॉजिटिव साइन, so then x is equal to, on taking positive sign, x is equal to taking positive sign, तो x is equal to minus 3b minus 7a and plus 3a minus 7b and whole upon 20. ओके, तो ये वाला पार्ट है. अब इसको सॉल्व करो जरा क्या होगा. तो देखो यहाँ पे 3b minus 7a है और इधर 3a minus 7b. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द सेम टर्म. तो वी कैन टेक द कॉमन आउट. नो, कुछ नहीं बन रहा है. 3b और 7b तो मल्टीप्लाई करो सीधा. तो x is equal to मल्टीप्लाई, तो minus 3b minus plus 7a then plus 3a and minus 7b and whole upon 20. तो फर्स्ट आंसर फॉर द x, then 7a plus 3a 10a and minus 3b minus 7b minus 10b and upon 20. तो x is equal to 10 common out, so 10 common out, so 10 to the 20, a minus b and whole upon 2. Then this is the first value of the x. Okay, this is the first value of x. Next second value when taking the negative sign. तो negative sign, तो then यहाँ पे क्या आ जाएगा, x is equal to minus 3b minus 7a and minus 3a minus 7b and upon 20. Upon 20. तो x is equal to minus 3b plus 7a minus 3b plus 7a and minus 3a plus 7b and whole upon 20. तो x is equal to minus 3b
and plus 7b, तो plus 4b and 7a minus 3a, तो plus 4a upon 20. Now you can take the 4 common, तो 4 common, तो 4 5 is 20, तो finally our answer is a upon b. 4 5 is 20, तो a upon b plus 5. So this is the solution of question number 21, third part. First answer x is equal to a minus b upon 2. Second answer is a plus b upon 2. A plus b upon 2. Okay. Next, the question number 21. We can take the first part. Okay, 21 first part. First part, and the first is a square x square minus 3abx minus 3abx and plus 2b square is equal to 0, plus 2b square is equal to 0, and using the formula, so then compare this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. इसके साथ इसको कंपैरिजन करो, तो then what is the value of a is a square. Next, b is equal to b, the coefficient of x, b is equal to 3ab and sign is negative because it is positive. Okay, now c is equal to 2b square, so 2b square. Using the formula, and you know the formula is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac and whole upon 2a. So x is equal to, what is the value of minus b? So minus b is minus and minus 3ab. Okay, then plus minus root b square minus 4ac. So b square is minus 3ab whole square minus 4 into a. A is a square and c is 2b square, and upon 2 into a is a square. Then on solving this one, so x is equal to minus minus plus 3ab plus minus root. Okay, so then it is कितना हो जाएगा, 3 3 जा minus minus plus, तो 9a square b square 9a square b square minus 4 2 जा 8, तो 8a square b square and upon 2 into a square, तो 2a square. इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, x is equal to 3ab plus minus 9a square minus 8b square, तो 9 minus 8 1 and a square b square, a square b square subtract हो रहा है डायरेक्ट and whole upon 2a square, तो 2a square, तो x is equal to 3ab plus minus, then can we write this one is a b whole square, a square b square a b whole square, and this square and root we can say that cancel out, so then what is left, ab is left plus ab upon 2a square. So on taking the positive sign, so 3ab plus ab, so 3ab plus ab upon 2a square. So what is the value of x? X is equal to 3 and 1. ab same, so x plus x 2a, so 3ab plus ab 4ab, so 4ab upon 2a square. 2 to the 4 and here is the 2a and 1a in the numerator, so we can cut the 1a. So x is equal to 2. Finally b is left, so 2b upon a. So this is the first answer. Second time taking the negative sign, so negative sign, x is equal to 3ab minus ab and whole upon 2a square. So x is equal to 3ab minus ab, so 2ab upon 2a square. 2 cancel, 1 2 and 1a is cancelled 2. Okay, so finally x is equal to, what is left, b and 1a is left in denominator, so b upon a. So this is the solution of this question. Okay, so I hope you understand the problem based on the formula. जितने भी इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बेस्ड है वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अब नाउ फॉर द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं. तो क्वेश्चन नॉर्मली आएगा आपके पास, फाइंड द आंसर, find the value of x up to 2 decimal places, find the value of x up to 1 decimal place. या नॉर्मली क्या हो सकता है, बट नॉर्मली जो एग्जाम में आता है वो आता है फाइंड द आंसर अप टू
2 या 3 डेसिमल प्लेस। ओके, तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ओके, जितने आप लोग सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, दूसरा एक और चीज, वन मोर थिंग, इफ अगर आपके क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द आंसर, फॉर एग्जांपल द वैल्यू इज 2.345, okay, the x is equal to 2.345 and the question is find your answer in two significant figure। अब यहां पे वो नहीं लगेगा कि 2 डेसिमल प्लेस। ओके, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मींस x is equal to 2 now we have to take the two number here, तो first number is 2, first number is coming to पॉइंट, इसका एप्रोक्सीमेशन कर दो, तो 3 4 5 का एप्रोक्सीमेशन 3 होगा, 300 मींस 3, तो दिस इज द आंसर ऑफ इन अ टू सिग्निफिकेंट फिगर। अगर क्वेश्चन दे रखा x इज इक्वल टू 4.98, ओके, एंड द क्वेश्चन इज राइट योर आंसर इन टू सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज योर आंसर इन द टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर मतलब आपको दो ही नंबर लेने हैं, दो नंबर लेने हैं, तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर 4 पॉइंट और इसका एप्रोक्सीमेशन कर दो, तो व्हाट इज द एप्रोक्सीमेशन 99 इन 100, 98 का एप्रोक्सीमेशन 100, तो आंसर इज 4.98 जा रहा है ना, तो 98, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं या एप्रोक्सीमेट, अगर एप्रोक्सीमेशन यूज करना है तो यहां पे तो तब कितना हो जाएगा, सीधा 5.0 हो रहा है, पर टू सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है तो इस केस में आपको टू सिग्निफिकेंट फिगर में 4.99.1 इसमें आप लिख सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर, इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल आंसर बन रहा है 5 के फॉर्म में बन रहा है, 5.00 ले सकते हैं। ओके, तो इस टाइप में नहीं पूछेगा 5.0। ओके, तो अगर आप दूसरा क्वेश्चन ले लें, अगर है 4.28, तो व्हाट इज द आंसर इन द टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो x इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज 4, सेकंड नंबर एप्रोक्सीमेशन 2.3, तो दिस इज द आंसर इन टू सिग्निफिकेंट फिगर, ये टू सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर बोलता फाइंड योर आंसर इज अप टू 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस या 1 डेसिमल प्लेस, फाइंड योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अप टू 2 डेसिमल प्लेस या 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 डेसिमल प्लेस 4.228 4.3। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर में आपको उतने ही नंबर लिखने और अप टू डेसिमल, तो डेसिमल के बाद के नंबर आपको लिखने। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम, 22, कितने बचे हैं, 5। ओके, एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, those question are left because all are the simple one, so you can try to at your home। ओके, आपको बहुत टाइम मिल रहा है, ट्राई कर सकते हो, जहां पे नहीं आएगा आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आप लोगों के सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टुमारो वी विल टेक द नेक्स्ट वन एक्सरसाइज एंड दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। Okay, so tomorrow we will meet again, and if there is any problem you can send your question in the WhatsApp group। Okay, thanks for watching this video। तो नया चैप्टर ना, इसके बाद सीधा नया स्टार्ट होगा ना, नया स्टार्ट होगा, बीच से करना सही नहीं है फिर।